to all the participants. Am I audible? Thank you. Thank you very much for the responses. Again, a very warm welcome and good evening to all participants. Speaker of today's session, Dr. Mahendra Prasad sir, organizers, and we are having a chairperson for today's session, Professor Surendra Sharma sir. Today's session, we will be discussing about concepts of Ayurveda, basic concepts of Ayurveda, including concept of Agni, Kost, and Am. I would like to invite Mahendra Prasad sir for today's session. Sir is currently working as associate professor in NIA. Sir has asked me to keep it very short, so I will not take much time about introducing him. I will request sir to please. Thank you, Dr. Sarika. Is I am audible? Yes, sir. Audible हैं आप, audible हैं. Okay. Thank you, Doctor, for providing me such a platform to deliver a concept of Agni, Kost, and though who have introduced me, I am working as an associate professor in NIA. So I am going to deliver my concept regarding the topic Agni, Kost, and Am. Okay. So these are interrelated, Agni, Kost, and Am. Basically, first one is the Agni, which are responsible for the various metabolic activity, and the second one is the Kost, where these are residing, and the third one is Am. These are going to be as a pathological stage. So sorry. Sarika ji, हेलो. जी सर. हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, आवाज आ रही है. स्लाइड आगे दिख रही है? स्लाइड सर अभी फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है. कंसेप्ट ऑफ अग्नि कोष्ठ हम जिस पे लिखा है वो स्लाइड है. चेंज नहीं हुई है अभी सर, उसी फर्स्ट स्लाइड पे ही है. अभी चेंज हो गई है सर, चेंज भी दिख रही है, व्यू दिख रहा है. The literal meaning of Agni is fire, which can be understand as a inhuman being, as a biological, physical fire in the living organism. Though this fire is the have in human body as a maintain the integrity and the vital activation at the certain level. And this Agni is basically doing the Pakadi Karma, the biophysical changes and the biochemical process occurring at the gross level and the minute level. So regarding this aspect, we are going to understand what is Agni in the respective aspect. Sorry. The word meaning of Agni exists in the four form. Number one, Divyagni. As a Divyagni is existing in the sun. You see this photo, we can understand as a Agni, this called as a Divyagni. And the second one is the Audaryagni. This is one the abdominal fire existing in the abdomen of all animal in this inverse. Means in spite of this Audaryagni, there is Akarajagni present in ores and the minerals as a luster. As see, these are termed as Agni and different respect. Broadly, it is divided as a four aspect,
and the fourth one is the Bhaumagni, that is the terrestrial one. This existing in the earth in the form of flame. You saw in the different aspect what I am showing to you. Okay. Going to the etymology and the synonyms of Agni. This the Agni is derived from the two roots. Agni gato means to move or motion or change. Means which have capacity to change it. And the second one, that is the anga vyapto, to pervade, means existing in the everywhere. That's why it is called the anga vyapto. And the different aspect of this description we saw in the different context, that is the Viswanar, means digestion of food in the coast. Means one thing had changed the name according to its the action and the description. The food digestion in the coast, which called as the Viswanar, and the Tanuna path is essential for life. That's why Agni importance is given in the Charak Samhita, so importance. And the second one is the Saropak, digestion of all. Everything going to be the digest, what we are taking it. And the next name as the Agni is Amiu Chatan. Amiu means disease, Chatan means Ghata, means destroyer of disease. In this reference, very usual and the very nominal and the general terminology as providing as a Roga Sarve Api Mandagno, Sutra Mudrani Che. Means disease are creating due to the disruption of the Agni, or Agni has the tendency, Agni have the capacity to digest and the maintain the Ayu, as the definition of Ayu is have mentioned in the Charak. Next one, Suchi means Sodhak. Yes, substance have trying to Suchi means Sodhak. The Agni have property to purify it. And the Agrani, first position in Yag. We are going to the use as a Yag in the Agrani. In Ayurveda, Pitta is described as Agni in the body. So, in reference, all description we called as the Agni, the different nomenclature, and the meaning is to change one form into the another form. The next one, Ajar Vijayarachita mention the Tej Bhag in a Pitta. Pitta is only Agni. It's going on. This Tejas have the two aspects. One is the Usna, heat, and the second one is the Bhaswar. Means Usma we can use at a Ushna in the form of heat, and the second one Bhaswar as in the light, which provided the visible condition. This relation between this relation between the Agni and the Pitta is also established as the cause and the effect. This Agni Drav increases Pitta in the body. That's why in Samhita is called as Agni Dev Sarire Pittantargata Gupta Gupta. So means Agni and the Pitta are residing in a Asyastri Bhav. This second description is the Agni drugs which have the capacity to Agni, tendency to Agni stimulation. And this Agni in the body is termed as the Jatragni, Kayagni, Deyagni, Pachikagni, and the Audaryagni. So this terminology on the basis we can call as a Jatragni, Kayagni, and the different nomenclature. And all this Agni have capacity to change from one form to the another. Means a person taking in the diet component is not exactly lie in the body.
but are going to be the change. This is the peculiarity of this Agni. सारिका जी, जी सर। ये थोड़ा सा जी सर। इस पे बार बार इशू आ रहा है। सर हमें तो ऑडिबल है आपकी आवाज। नहीं, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल वाले थोड़ा सा इसको ध्यान सर दीजिए। बताएं सर। जी जी। जी सर बताएं। इसमें बार बार टू मेनी ओवरलैपिंग विंडो दिखा रहा है। हाँ सर, एक बार आप पीपीटी को क्लोज करें और रीओपन करें। स्लाइड शो व्यू में ओपन करें, रीओपन करें। कोई और भी ऐप ओपन है सर आपके सिस्टम में? नहीं तो टास्क बार पे सर देखें और कोई ऐप ओपन है तो उसे आप प्लीज़ पहले क्लोज कर दें और पीपीटी रीओपन कर लें एक बार सर। नो सर, विजिबल। हाँ, ओके। ओके सर, थैंक यू। Now, what I have told the Agnirev Sarire Pittantagada means what Pitta and the Agni. Means there is a two terms coming. One is Pitta and the Agni. Then this Ashtang is the car. What I have mentioned. Tatra Pakvamasa Madhagama. पंचभूतात्मकत्वेपि यत् तेजस गुणोदयात् मीन्स the dominancy of tejas guna and त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा अनल शब्दम. This is the important. There is difference of pitta and the agni is त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणा means there is removal of fluid component providing the anal shabda means agni. That has the responsible for the पचत्तन्य विभज्यते सार किट्टो पृथक तथा एंड तत्रस्थमे पित्तानाम शेषाणाम अप अनुग्रह. वही जो पित्त है शेष बाकी पित्त को बल दानेन पाचकम नाम तत्स्मृत. वो पाचक पित्त है, वो जो शेष सभी पित्त है वो उसको अग्नियों को उसको अनुग्रहित करता है. Means this is the beauty of the pitta and the agni. So many queries might be there arises that what is the pitta, what is agni, if the pitta is increases, why the agni is not going to be the increases, I will discuss. Similarity of the agni and the pitta. Agni and pitta are the same. We can find in the any other agni or the fire in the any body part like this kupita akupita. Two words are there, and the most important is the agnidev sarire pitta antargata. Agni is located in the pitta, means where is pitta, there is agni. In other word, you can say that is the pitta have a attribute of agni. If agni is there, though there is the action of paktima pakti, means digestion and the indigestion. विजिबिलिटी एंड नॉन विजिबिलिटी, मात्रा मात्रा उस्मरत्व, प्रकृति विकृति वर्ण, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह. मीन्स वन इज द नॉर्मल स्टेट, सेकेंड वन इज द एबनॉर्मल स्टेट. देयर इज डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द पित्त एंड अग्नि. एंड द नेक्स्ट वन, इज देयर डिफरेंस Pitta and the Agni? Yes. The color of Pitta Agni is not determined in the knot as they mentioned, but Pitta has the Niram and the Ama. Means Ama has the Nila and the Niram is the Pitta in color. And the taste, no taste as such in Agni, but Pitta has the Katu. And the smell, no smell as such in the Agni, and the Pitta has the Visra and the Putigandha. And the consistency, and there is the Suska, and the Pitta have the Drav. And the Guna, the Ruksha Guna, and the Snigdha Guna. Gati of the Agni is Urdhva, and the Pitta is the Adho.
If you consider Pitta Agni are the same, then why the Susruta mentioned the two different entity as Samadosha and the Samagnischa? Samadosha means there is the Vata Pitta Kapha. And in spite of Samadosha, there is also mentioned as Samagnischa. It means it provided so much importance of the Agni as compared to dosha. So we can consider at a Agni is the some other entity and the dosha is the other entity. In spite of it have the some importance as much is concerned to Agni. Like very clear cut demarcation of the mention Acharya Madhavji as मंदे अग्नो पित्त कर्म ऋचादि द्रव्योपयोगाद अग्नि वृद्धि. जो मरीच आदि द्रव्य है वो अग्नि की वृद्धि कर और पित्त को वृद्धि करता है. एवं पित्त प्रतिकूलम शीत मधुरादि द्रव्योपयोगाश्च उपशम. मीन्स पित्त के प्रतिकूल शीत मधुर आदि द्रव्य का उपयोग उपशमन के लिए किया जाता है. यदि ही पित्ताद अभिन्नो अग्नि स्यात् तथा पित्तस्य वृद्धि नाश अनुविधान मत्स्यानुपन्न स्यात्. नेक्स्ट, किंचन घृतम पित्त समने अग्नेश्च दीपनम. लेकिन वही बताता है कि घृत क्या करता है, पित्त को समन करता है, अग्नि को दीपन करता है. पित्त संचयादो ना अग्नि वृद्धि. अगर समान होता तो पित्त अगर बढ़ता तो उसके साथ अग्नि वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. पेयादिकम च अग्निकरम. जो पेयादि द्रव्य है वो अग्निकर होता है, न पित्तकृत है, न कि पित्त को बढ़ाने वाला होता है. ततश्च पित्ताद विलक्षणो अंतरग्नि. अर्थात पित्त का जो विलक्षण है वो अंतरग्नि है. इस तरह से द्रव तेज समुदाय के संदर्भ से हम इसको दोष को, पित्त को और अग्नि को समझा जा सकता है. अब लोकेशन ऑफ पित्त या लोकेशन ऑफ अग्नि, दे आर द एंटायरली डिफरेंट. मीन्स इन रिलेशन टू पित्त एंड अग्नि. मीन्स आमाशय एंड पक्वाशय, इन बिटवीन आमाशय पक्वाशय मध्यगम. And second component comes under the liver, and you go for the every cell tissue level. That comes for the every tissue level. Will come for the location of Agni. So many description is there in the reference of this Koshtagni. There's so many description regarding the location of Agni. There's the coast and this particular space, and the liver and the every cell tissue we discuss in reference of the different dhatu level and the Agni level. This broadly divided the Agni into three components: Jatragni, Bhutagni and Dhatwagni. This is the consequences basically. First we ignite the Jatragni, then it will again ignite the Bhutagni, then Dhatwagni. So this hierarchy means there is the minute level of going to be the Agni in the tissue and the cellular level. So why is going to be the importance Agni as a importance? Means description is the provided by the Acharya Charak. The Sante Agnomrite Yuktam Chiram Jivatanamya. Means Agni शांत हो गई तो means मृत्यु है. युक्त चीरम जीवत अनामया. अगर अग्नि युक्त है तो जीवत अनामया मीन्स बिना रोग के जीवन लंबी होती है. रोगी से आद्विकृते मूलम अग्नि तस्मान्य रुच्यते. रोगी से आद्विकृते, अगर अग्नि विकृत होती है तो वह रोगी होता है. अतः जो अग्नि होती है उसकी उसी की रक्षा करनी चाहिए. और मूल अग्नि जो है वही स्वास्थ्य का परिचायक होता है, स्वयं वही स्वास्थ्य को देने के स्थिति में होता है. Then what is the function of Pitta and what is the function of Agni?
means there is the entirely to some extent there is difference. Agni means Ayu, Vardo, Balam, Swaso, Upcha, Prabha. Ayu, Vard, Bal, Swas, Utsaह, उपचय. ओजस तेजो यज्ञ है और ओज भी वो अग्नि में स्थित होती है. इसके साथ प्राण जो है द्वादश प्राण है वो भी अग्नि के ही अंतर्गत समाहित होता है. तो इस तरह से अग्नि का इतना महत्व दिया है. पूरी जिंदगी की अगर बात करें तो पूरी जिंदगी आपकी अग्नि के अंतर्गत स्थित है. तो वह फिर जो अग्नि के डिस्क्रिप्शन दिया है कि पित्त के अंतर्गत ही अग्नि रहता है. और इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो सुश्रुत ने भी बोला है न च पित्त व्यतिरेय काद अन्यो अग्नि, जो अग्नि है वो पित्त के अलावा अन्य नहीं है. तो ये सोचने वाली बात होता है कि कहाँ किस संदर्भ में हमको अग्नि के संदर्भ की बात करनी है, कहाँ हमको पित्त के संदर्भ की बात होती है. अग्नि भी अगर विकृति होती है तो दोष का हेतु लेता है और दोष जब विकृति होता है तो अन्य रोगों को उत्पन्न करता है. Thus, the function, the attributes of pitta means there is the attributes such as sasneha, mushram, tisram, dravam, amlam, saram, katu, vipreet, gude, pittam, drabya, rasu, samprasamyati. And function we consider it as darsanam, bhakti, suma, chitrisha, mardavam. Means there is a location wise function has the described. Darsanam means have capacity to see, either visualize or analyze. And the bhakti means digestion, either broad level or minute level. And the body temperature. Body temperature comes under the two category. One is the normal temperature, second one is the abnormal temperature. Abnormal temperature may be created due to vitiation of pitta, and normal function is the to maintain the body temperature as in normal stage. And the Chutrishra Dehmardam means these are the responsible for the by the this pitta. So this pitta is responsible to this Chutrishra Dehmardam means softness of body, and the Prabha means lustureness, and the Prasad forgiveness, and the intellectual. All these comes under basically this metabolic activity in the different body part, resultant this observational characteristic in the body. So though this bhakti means comes under the both component, one is the Agni, second one is the Pit. Means there is the Ushram Gud. Ushram Gud is the responsible to Agni, and this is the basically comes under the Pitta. When we are talking different the component drug and the other component, we will consider the every drug has the specify for is the Panchabhautik composition, and this Panchabhautik composition provided dominancy or characteristic to particular attributes. Now, can we consider the Pramana of Agni? What it might be? Means we are concerning with our lexicon what they have described as a tilonmitam. Means Praman is the Til Praman. Pachikagni in normal person, in normal human or larger animal. And the second one is the Sthul Kayasu Satyesu, Yomatra. Means Yomatra Praman, the Sthul Kaya person have the Yomatra Praman. Means Yomatra and the Tilarup means there is some observation is there. You are going to be the homologous quantity have there, they are going to be the described as the Sarangadhara and the Bhel Sankita. But Vasu Kayasu Satyesu Truti Matra means Truti mass is the particle. Yeah, any atom, yeah, any component comes under the Praman in the Vasukayasu. Means body is not going to be the very large.
And Krimi Keet Patangesu, these are the Vayu Matra, means you can assess as the Vayu what quantity will they have, such amount has this Jatrakni Pramana. Means if we call it as a study point of view, the very difficult to identify this Pramana Matra. It is not going to be the easy to say that the Ya Pramana Truti Matra Til Pramana. Nothing we can find that this Pramana is the mention in the body as it is the importance. Some people are saying that this is the Matra as a SA node or anyone else secretion from the heart. It might be, but it is not exactly the proved. Next one, the relationship of the Srotas and the Agni. This means Agni are residing in the Srotas at minute level when we are going to describe at is. Then Amasa in the Pravishya Manurgamya Pidhaya cha Srotans Pakti Asthanasya Nirasya Jwalanam Bhayin. Means during this disease condition, the Srotansi means Srotas are going to be the vitiated, and simultaneously the Agni are going to be also vitiated. And this vitiation of Srotas leads to this Agni are going to the outside from this coast. This coast leads creates to temperature, this santap. And the Srotansi Rasadi Vahinam Pivaya Chadi Tatha Jolnam Pakti Asthana by Nirasin Iskasa. This especially described as in the Jwar relation. There is vitiation of Trayodasanam Agninam Madhyat Katam Jolna Asthanat Bahi Niraseti. ये 13 अग्नियां जो बताई गई हैं, एक पाचकाग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि, ये सभी अग्नियां अपने धातुओं से अपने स्थान से बाहर निकल जाती हैं और वहां पर ज्वलन या संताप उत्पन्न करता है. तो और यहाँ पर चूंकि ज्वर को रोगराट भी कहा गया है, तो यहाँ और नहीं रोग के डिस्क्रिप्शन करके, बल्कि इन्होंने ज्वर के संदर्भ में कहा है. जहाँ की ज्वर के बारे में अगर पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो ज्वर का डिस्क्रिप्शन आपको धातुगत भी दिया है, दोषगत भी दिया है, मलरूप भी दिया है, बाहर के आघातज भी दिया है. तो इन सभी के संदर्भ में यहाँ पर 13 अग्नियों का डिस्क्रिप्शन किया है, जो कि हर एक स्रोतस से अग्नि का संबंध प्रतिस्थापित होता है. तो स्रोतोदृष्टि करण एंड लक्षण. स्रोतोदृष्टि का कारण क्या हो सकता है जिससे अग्नि विषम या डिस्क्रिप्शन में आते हैं. जैसे आहार विहारश्च सा दोष गुणे समः धातुर्विगुणश्चैपि सोत्साम च प्रदुष्क. आपका जो भी दोष, जो भी धातु, जो भी स्रोतस विगुण होता है, उसके लिए जो मुख्य जिम्मेदार होता है वो आहार और विहार है. इसलिए हर किसी रोग का जो प्रथम हेतु होता है वो आहार और विहार है. तो इस आहार और विहार के द्वारा जो दोष होते हैं वो विगुणित होकर के स्रोतों को दूषित करते हैं. और जब स्रोतस दूषित होता है तब आपका अग्नि विकृतित होती है. अब स्रोतस दूषित कितने तरह से होता है? या तो अति प्रवृत्ति हो, संग हो, या बीमार गमन हो, या ग्रंथि है. ये 4 मुख्य कारणों से स्रोतस की दृष्टि होती है. तो इन चारों के कारण आप अगर देखेंगे तो अग्नि की दूषित होने की संभावना रहती है. अब दूसरे अगर पूरे स्रोतस की अगर बात करें, स्रोतस की जहां दृष्टि आएगी वहां पर अग्नि की दृष्टि निश्चित होती है. तो दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अग्नियों का स्थान हर एक स्रोतस के समीप या स्रोतस के संदर्भ में स्थित होते हैं. यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, ये हम न्याय जो विचारक होते हैं, दर्शन होते हैं, दर्शक के अनुसार हम ये बात करते हैं
पूरे शरीर में जो पाक अगर पूरे एनालाइज किया जाए तो उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, पीलू पाक और पीठर पाक। जो हमारा ये ग्रीन और वाइट कंपोनेंट दिख रहा है बेसिकली ये रॉ मटेरियल है, और अब जो पीलू पाक में जाता है वो आगे जा कर के कन्वर्ट होके अपने शरीर के भाग में समाहित हो जाता है। लेकिन वहाँ समाहित होने पर उसका जो अगला पाक होता है वो दो कंपोनेंट, ये दो तरह से होता है। एक तो उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे एक पाक होता है, दूसरा जो डिफरेंट ये मॉलिक्यूल हैं वो एक कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं या बिल्डिंग अप के फॉर्म में हो जाता है, जिससे हम पीठर पाक के संदर्भ में करते हैं। या जो पीठर पाक होता है एक बड़े मॉलिक्यूल का पाक होता है, या जो पीलू पाक होता है वो छोटे मॉलिक्यूल का पाक होता है। ये हमारे वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जो ये दो दर्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन आया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कहाँ कहाँ से किसका अंश या कहाँ से पाचन की प्रक्रिया होती है। तो ऊपर जितना भी बताया है तत्र स्मेचात्म शक्त्या शेषाणाम पित्तस्थानानाम शरीर से च अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। तो यहाँ पर जितने भी आप आहार ग्रहण करते हैं उनका वो पाचन करके तथा विवेचन करके रस मूत्र पुरुष आदि में उसको तोड़ करके अलग कर देता है, तथा वही जो पित्त स्थान है वो दूसरे अन्य पित्त को अनुग्रहित या बल प्रदान करता है। जो पाचक पित्त है, पाचक पित्त आने के बाद उसके बाद जो आगे उसका पाक की प्रक्रिया होती है, यथा स्व स्वच पुष्णति देहे द्रव्य गुणा पृथक पार्थिवा पार्थिवान्य शेषा से साक्षी कृष्ण मीन्स स्व स पुष्णंति। वो जो महाभूत है, हम यह सभी आयुर्वेद के विद्वान है सब जानते हैं कि सभी चीज प्रत्येक जो है पंच महाभूत से बना है। तो जो अपने अपने पंच महाभूत के कंपोनेंट होते हैं वो अपने अपने रूप में शरीर में परिणित हो जाते हैं। वहां पर पार्थिवा पार्थिव है, जो पार्थिव है पार्थिव के रूप में पाचन होता है, और जो आप्य है आप्य के रूप में पाचन होता है, आग्नेय आग्नेय के रूप में, वायव्य वायव्य के रूप में, और नाभस नाभस के रूप में। वो जो हमारे शरीर में भी पांच भौतिक है वो उसको शरीर के सजातीय रूप में बदलने का कार्य करता है। तो वहां से जाने के बाद अब इसका आगे का जो पाक होता है वो पुनः दो भागों में बंटता है। कब? जब धातु अग्नि का प्रक्रिया होती है, यहाँ पर धातु अग्नि का काम होता है, तथा वहां उत्तरोत्तर उसके धातुओं में स्थित जो पाचिकांश है, पहले से अग्नि की अंश उपस्थित रहती है, वो उसके द्वारा वो जो विभिन्न पाचन की प्रक्रियाओं या धातु निर्माण की प्रक्रियाओं से पूर्व धातु के लेकर के उत्तरोत्तर धातु का निर्माण करने के लिए जहाँ अग्नि का प्रयोग होता है, वो अग्नि उसको दो भाग में परिवर्तित करती है। तो वह एक धातु रूप, जिस धातु अग्नि का काम कर रहा है वो धातु रूप में होती है, और दूसरा उसको किट के रूप में परिवर्तित करती है। और ये प्रक्रिया जो बताई गई है इसको ये खले कपोत न्याय, क्षीर दधि न्याय के द्वारा ये सिद्धांततः उसको प्रमाणित करती है कि सभी धातु जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र हैं, ये सभी सिक्वेंसली एक दूसरे को प्रसादज करती है, मीन्स उसको पूरित करती है, अनुग्रहित करती चली जाती है। और इनका जो सिद्धांत है ये क्षीर दधि न्याय के अनुसार बात करेंगे तो एक दूसरे से संपर्क में जाता है, लेकिन जब खले कपोत की बात करेंगे तो वो सोर्स और एक्शन वो इंटायरली एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है, उनका इंडिपेंडेंट काम करता है। जैसे अगर किसी में रक्त अगर कमी हो जाए तो उसको रक्त सधर्मी अंश वाला ही भाग हम देते हैं, जिससे उसको रक्त की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ रक्त के जाने के बाद फिर वह अन्न में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रथम जो जाएगा वो रक्त धातु में ही जाएगा। तो वो रक्त में जो रक्त सधर्मी अंश है और रक्ताग्नि की प्रक्रिया करके
उसको रक्त में परिणित कर देता है। इसी तरह अन्य, अब जैसे आम गर्भ है, आम गर्भ भी उन्हीं को दिया जाता है जिसकी गर्भ च्युत होता रहता है, तो उसके भी उस सिद्धांत को वहाँ जो आम गर्भ की दिया जाता है, उस संदर्भ में भी अग्नि जो है उसको गर्भ को प्रसादज रूप में या गर्भ को पुष्टि करता है। इसी तरह जो मांस है, जो मांस का ग्रहण करते हो, मांस को ही पूरित करता है, लेकिन जो सम्यक रूप से आहार का उपयोग करते हैं वो विभिन्न तीनों तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा आगे बढ़ती है। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी अग्नि 13 ही प्रकार की होती है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जितने जितने शरीर के आपके अवयव हैं उन सभी अवयवों के अनुसार आपकी अग्नियां उपस्थित होती हैं। यहाँ मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम लोग 13 अग्नियों की बात किए हैं। एक जाठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि। लेकिन यहाँ पर जो अरुंधति ने बताया है कि सप्तसु शिरासतेषु सप्त अग्निशतानि पंचसु मांसपेशी सतेषु च पंचाग्निशतानि इति। मीन्स यहाँ पर 700 शिराओं का और 500 मांसपेशी का वर्णन किया है कि 700 शिरा के लिए 700 अग्नियां हैं और 500 मांसपेशी के लिए 500 अग्नियां हैं। इसी तरह हमारे शरीर के जो भाग, जिस जिस अवयव की बात करेंगे, कंडरा की बात करेंगे या स्नायु की बात करेंगे, उन सब के लिए अपनी अपनी अलग अग्नियां उपस्थित हैं। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मॉडर्न पैरामीटर के लिए कि हम इसको किस संदर्भ में उसको समझ सकते हैं। अब जो जाठराग्नि है, जाठराग्नि 5 प्रकार की है। जो जाठराग्नि 5 लेवल पर इसको डिवाइड किया गया है और इसको स्थान और कर्म के आधार पर भिन्न भिन्न है। जैसे साधक पित्त ब्रेन के लिए है, आलोचक आपकी आंख के लिए है, ब्राजक पित्त त्वचा के लिए, रंजक पित्त लीवर के लिए है और पाचक पित्त आपका ग्रहण के संदर्भ में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए है। तो ये पांचों के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है, महत्व है और इसका अग्नि का वर्णन है। तो ये पांचों के लिए सुश्रुत ने अग्नि का ही रूप दिया है और कि ये जो पांचों पित्त है वो पांचों अग्नि के रूप में उसको हम जानते हैं। अब पित्त की अगर बात करेंगे तो पित्त के लिए जो शब्द है तप संतापे नाम से लिया गया है, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है और हीट के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से तप दाहे के लिए शरीर में जो बर्न होता है या जो शरीर में जो उष्मा उपस्थित होती है उसको तप दाहे के अंतर्गत करते हैं। और पित्त जो है बेसिकली ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, अग्नि और जल। जैसा कि पहले हम लोग बात किए त्यक्त द्रोतम पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम, तो उस संदर्भ से हम इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि पित्त 2 कंपोनेंट से है, एक फायर है और दूसरा जल है। और पित्त की जो बैलेंस स्थिति होती है और इम्बैलेंस होती है उसमें हम लोगों के संदर्भ में वेल अवेयर हैं। ऑर्गेनाइज वे है, करिस्मेटिक है, ड्राइव एंड हार्ड वर्किंग है, लाइफ ऑफ द पार्टी कॉन्फिडेंट है। And the imbalance में so many diseases that comes under this 40 diseases it are going to be the created. In spite of that there is the so many सामान्य व्याधियां है, there is the involvement of पित्त रोग। This Pachikagni I have described as in the test as we have discussed earlier. In spite of that Agni, there is some other component involved for the digestion process, that is the Kletakap and the Samanvaya. This Pitta Sasnya Mushram Tisham Dravam Amlam Saram Katu, this basically we can be assess it as in the subjective parameter what they have. This Ushna, Tishna, Drav, Amla, we can assess on is the subjective parameter by deciding the gradation in the hierarchy level. And this function of pitta earlier I have mentioned Chaturvidam Annapanam Pachati Vechita the Do Sarasmutra
Purisani Tattvasya Atmasakya Sesanam Pittasthanana. We have discussed it earlier. And the next one, what we can be understand on the basis of Pitta and Agni in relation to modern parlance. This, it might be, we are aware in the contemporary science that the gastric juice have the different type of enzymes in the digestive capacity, the pepsin, renin, the gastric lipase, and the almost all digestive capacity comes under pancreatic juice, that it make as a marker as the pancreatic juice for the lipase, yeah, pancreatic juice the lipase for the digestive process. Means during the pathological condition we can assess as the pancreatic juice for it as the lipase activity, means serum amylase providing the normal functioning of the pancreatic juice. This digestion comes going to be the take this part Kledak Samanvay the Pachak Pitta. I described in the Ahar Pradam Karbha Usma Vayu Kled Sneh Kal Sam Yoga Sthiti. On that basis, this appropriate digestion going on, and everyone has the importance value for the digestion, including Vata Pitta and the Kapha. It's taking the component. This process of digestion includes three stages, anatomical in the GIT, while Vatadi precursor of Dhatu as the produce, as we discuss as in the Avasthapak level. Means the process comes under the Avasthapak, Madhura Avasthapak comes in the Amase, stomach. Earlier, the next last class, we have discussed about the Malarupi Kapha, the Pitta Rupi, Malarupi Pitta and the Malarupi Var. That means Madhura Avasthapak going to be the digested occurring in the Amase. At that time, the Malarupi Kapha is the produce, means so many components are there. The carbohydrate, either it will be monosaccharide, disaccharide, polysaccharide, even though polysaccharide going to be the digested earlier in the mouth and the saliva with the action of salivary amylase, and going to the broken in the glucose. And the second is the Amla Avasthapak occurring in the duodenum. Malarupi Pitta is the produce. When the juice is the secreted in the bile is the Achapit. Means that is the secretion during food material going to the pass from the duodenum. At that time, this neuronal and the secretion and the autonomic controlling phenomena going to be the secreted by this pancreatic juice, the pancreatic secretion with the action pre-post duration. Means cephalic phase, intestinal phase, and the post-intestinal gastric phase. Means these three conditions going to be the secreted from this intestine as well as the pancreatic juice. This all people are aware this pancreatic juice, the proteolytic enzyme, lipolytic enzyme, and the amylolytic enzyme. And the proteins going to the break the pancreatic juice in the amino acid, fats in the glycerol and the fatty acid, end product of the acid in nature. Where this is the very easy to say. This is the protein, fat, and the carbohydrate going to be the split into the different its monomer, but what they assume as in Ayurveda, these three monomers is the only limited are the different in spite of that. The so many components are there, and they have the very different variety. I did in the amalgamation the protein with the fat, and the protein fat with the protein, and the carbohydrate with the protein. They are going to be the amalgamated, and the making the simpler form will call as the lagu, and the complex form called the guru. Try to understand. This is the my job. What we call as a guru and the what we call as the lagu. Means we are going to be the very simpler form, which called the single lagu, and the which one has the very complex, which called as the guru one. So in this aspect, so many hypotheses is there in respect of
Ayurvedic perspective, Guru, Snigdha, Srakshan, Mridu, all these attributes going to be the digested and going to be the change accordingly with the action of this enzymatic activity, further going to be the change in the next one. And the Katuvasthapak, this occurs in the large intestine with the help of the Saman Vayu, going to be the absorbed and going to be the means making the harden due to the absorption of the fluid material and making it bulky. And this bulky part going to be the created, fermented, and created certain gases, and it is not exactly the certain gases that provide this vibe, but their tension and their strength and the neuronal action during this at the large intestine or provide the Katuvastha path. And at that site is the basically state of the main seat of the Vat. That's why it is the very important. The all food material going to the reside at the level of large intestine. So after that, first one is going to be the digested in the Jatragni and then Bhutagni. After the Jatragni part, completed Bhutagni part in the liver, basically, we try to understand what the Bhutagni is going on. The Parthiva Sesa Sesascha means component have this homologous to it in the body. They are going to be the assimilated and the same way as a body required. This is called the Bhutagni. And the changes, amalgamation, breaking, and the adjoining comes under this Dhatu-Agni level. So Bhutagni are found in both in the body and the food material, as both is made up of the Mahabhut. Jatragni ignites and the provide strength to the Bhutagni. This in another way we can understand this vitamins and the other components, electrolyte, have making the important to change the process and make a lesser activation energy, so the reaction can be easy by this enzymatic activity. This after Bhutagni Pak going to be the Dhatu-Agni Pak, as Charak have the mention. After the Bhutagni Pak, then Dhatu-Agni Pak. Dhatu-Agni denote the Agni present in the Dhatu level, which are basically body building material. And the Dhatu-Agni are 7 in number according to Dhatu level. So this is that's why basically the 7 component entity have it is the Agni level. So there is the number of Agni is the same. The final step of digestion is the completed by the Dhatu-Agni and resulted to formation of this Dhatu. On the basis of form, function, the composition may be endocrine secretion, hormones, endoenzyme, proteases, vitamin can be grouped under the Dhatu-Agni. Endoenzymes are made up of the protein, the copper, iron, zinc, calcium, and so many enzymes have the zinc and the magnesium have making the important. And during this formation of Rakta, we find that is there is the utilization of magnesium and the manganese, which going to be the change ALA to levulinic acid. Means there is so many description is there. And the coenzymes that comes times and they require for the activation of enzyme, and the some are Panchkans is present in Dhatu for their activation. Means some enzyme is present in the Dhatu and going to be the ignite and assimilated, means going to be transformed in the particular Dhatu component. And the role of Panchkans, they means Dhatu Asthayate Samadhyate Techanam Viddhi Chayaschi Dhatu Nam, means you find there is the peculiarity. Dhatu are going to be the Mand, yeah, Agni, Panchkans going to be the Mand, then it gets to Vriddhi, and Tichra then going to be the Chay, respective Dhatu. Means
there is description, if a Rakta Sadharmi ansh is there and the Raktagni is Mand, then there is Rakta Sadharmi is there, but not going to the conversion of Agni Rakta Sadharmi into Rakta Dhatu. This is the peculiarity of this sloka. And now come to the respective Rasagni, what it might be, means Pachkans and the heat content, the Ras Dhatu is called the Rasagni. The content it might be vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B1, B12, biotin, pantothenic acid enzymes, lipase, phosphates, etc. So which comes under the Rasagni. And the many endocrine substances from the pancreas, pituitary gland, thyroid gland, suprarenal gland, and the also comes under the Rasagni. And the ingested ahara digested in the ahara form, in the form of the Rasagni occurs, and there is the division of Sar and the kit. The micro part is the precursor of Rakta Dhatu, and the macro part is the Rasa Dhatu. Sorry, there is the misprinting. Raktagni means B12, folic acid, major role providing the Raktagni, and there is the also involvement of the ferritin and the tetrahydrofolate. DHFR is the precursor and the going to be the rate limiting step for the formation of Raktagni. This presence of extrinsic factor which considered as the Ranjak Pitta, and the action of Raktagni on precursor of Rakta Dhatu form Sar and the kit. Sar has also two components, micro and the macro. The micro part is the precursor of Mans Dhatu, and the macro part is the nourishes the Rakta Dhatu, means Rakta Dhatu. And the kit part is might be as earlier I have discussed. The Mansagni, the Pachkans and the heat present in the Mans Dhatu, in the muscular tissue, and the Agni component, the Mans Dhatu is present in the form of vitamin like thiamine, ascorbic acid, etc. And the enzyme like myokinase, CP, creatinine phosphokinase, MB, BB, and all the enzyme involved in the protein synthesis. And the activation of Mansagni or precursor of Mans Dhatu forms Sar. It might be the carmodulin, osin, chondroitin, troponin, tropomyosin, myosin, and the actin, which are making major role in the Mans Dhatu, and the enzymes and the hormone involving to formation of this protein, means translation prakriya. This comes under the Mansagni. And the Sar component, micro part is the precursor of Meda Dhatu, and the macro part is the nourishes Masa Dhatu. The provide energy, contraction, the relaxation in respect of the Mans. And the Medagni, Pachkans, and the heat present in the Medo Dhatu. And the Asthyagni, this Pachkans, and the heat component, Asthyagni, formation of Asthyagni leading to this calcitonin, parathormone, vitamin D3, estrogen, interleukin, and all these components are responsible for the formation of bone. And the next one, Majjagni, Pachkans present in the Majjagni, heat content in the Majja Dhatu. I think so. I am late. Time is too narrow. So this Majja Dhatu is the bone marrow, yellow bone marrow, and the red bone marrow. Regarding this, what component regarding component providing the this bone marrow and the yellow bone marrow, all this comes under the Majjagni. There is the initial, you call it is the embryonic life. There is the Majjagni, where the RBC production is basically is from the pliha, but Majja is the situated inside the bone, which comes under the Majja, and that formation responsibility is the Majjagni. Either brain, it might be the eyeball, what it might be. This RBC production in the Majjagni is the transformation at the time going to the past. So it might be will not consider as the vitamin B12 or the RBC production in the Majja,
because it is the initially we're talking about the initial step, then comes under the from the this majja as a bone and the bone content. And Sukragni, this several this hormones, testosterone, estrogen, progesterone, androgen, all this comes under the Sukragni, which is responsible for the formation of sperm and the ovum cycle. This next one means where I to emphasize that स्नेहो अक्षी त्वग ओज धातु नाम क्रमशो मल है जो ओज इज द मल ऑफ शुक्र धातु वाई इट इज सो बिकॉज in relation OJ we will consider as the essence part, either it may be upadhatu, either it may be mal in reference where it have the describe. The OJ is the described as the mal because the Shukra and Ardha are going to be the fuses. Then there is the formation of Garbha and OJ means Prathama Jayate OJ. So, and that reference OJ is considered as a mal, and the Garbh is the Prasad Bhag. The Agni according to different Acharya, we have discussed this so much in detail. This relation of those and the Agni means those are going to be the VCS in the respective Agni. The Madhagni, Tichagni, Bhismagni, and the Samagni. And this role of Agni in the Prakriti means Vata, Pitta, and the Kapha. Vata have Bhismagni, Pitta have the Samagni, and the Kap Prakriti have the Madhagni. These are the elaborated regarding the what we objective or subjective parameter we can make. And the measure to protect Agni, अग्नि और बल की अपेक्षा करते हुए हम अग्नि को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. In the Agni Dushti Karana, I am not going to be the detail, and this Agni treatment also I am going to be the skip it. And the Samagni यथा कालम उपयुक्तम अन्नम सम्यक पचती से समय दोष है. समाग्नि जो समदोष है वही अग्नि को उसका पालन करती है. तीक्ष्णाग्नि जो है, तीक्ष्णाग्नि ये लक्षण मिलते हैं. इस बेसिस पर हम पैरामीटर बना सकते हैं. मंदाग्नि में स्थिति में हम बना सकते हैं. ये स्वल्पम उपयुक्तम उदम शिरोगौरम मीन्स थोड़ा सा भी भोजन करने के बाद भी अगर आहार नहीं पाचन होता है तो हम मंदाग्नि की कैटेगरी में डालते हैं. भीष्माग्नि में कभी पकता है कभी नहीं पाचन होता है तो उसको हम भीष्माग्नि की कैटेगरी में डालते हैं. ये कुछ रिसर्च पेपर है, हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे. और जो हमारे डिपार्टमेंट में ये काम हुआ है उस पर हम थोड़ा सा ये बताएंगे, जिससे रसाग्नि के लिए, रक्ताग्नि के लिए, मज्जाग्नि के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर लेकर के हमारे डिपार्टमेंट में काम हुआ है लास्ट ईयर में. तो उसका पब्लिकेशन अभी कंटिन्यू में है. और साथ में जैसे कल भी चर्चा हुई थी, ये तीनों हम लोग वर्कशॉप करके उसके एक एक गुण के ऊपर उसका सब्जेक्टिव पैरामीटर बनाया गया है. और सब्जेक्टिव पैरामीटर को वैलिडेट करने के लिए डिफरेंट जो लर्नेड पीपुल है उनको बुला करके उसको वैलिडेट किया गया है. The overall whole conclusion, the Pitta is the considered the Agni present in the body, responsible for all the presence of metabolism in the different form. And the Pachak Pitta is combination of the different secretion, bile and the pancreatic juice, the succus entericus is the major level, and the minor level you call it as the certain phospholipase C and the thromboxane, interleukin, prostaglandin, or we will consider as the different body level. And the Bhutagni are the different type of the liver enzymes which is responsible for the transformation and the one type of substance into another form. And the external substance going to adopt according to the body requirement, and the vitamin are also included in this category. And the Dhatwagni are the secretion of endocrine gland enzyme in the some vitamins where as needed in the different tissue level. And the entity is the responsible for the digestion and metabolism also come under this category. Next one is the arm. Means
आम की डिफिनेशन ऑफ आम इज उसमें वो अब बलत्व है ना धातु माध्यम उपाचितम मीन्स एनी हाउ what your ahar and bihar is going to be leads to usmano alpabalatven means usma going to be the decline and dhatu ad apachitam the respective next dhatu are going to be the undigested that comes result in the arm and the why this is occurs this is the one reference in the mention as the viruddha chestasya madda agni nischalasya स्निग्ध भुक्तवतो यन्नम व्यायाम अकुर्वतस्तथा मीन्स स्निग्ध भोजन करने के बावजूद भी अगर व्यायाम न करे इस स्थिति में वायु नाम प्रेरित हो जाम है तो वायु जो वहां प्रेरित होती है वो आम की कैटेगरी में जाता है वो आमवाद की संज्ञा देता है स्निग्ध भोजन करने के बाद भी अगर परिश्रम न किया जाए तो वहां आम उत्पन्न होता है एंड दिस ट्रीटमेंट इज बेसिकली पाचने दीपने स्नेह स्थान स्वेद से परिष्कृतान पाचन और दीपन और अधिक मात्रा में अगर हो जाए यह शोधे छोसने काले यथा सन्नम यथा बलम तो इस तरह से उसको बल के अनुसार इसका शोधन करना चाहिए और ये निर्भर करता है कि दोष जो आम की स्थिति है आम कोष्ठ रूप में स्थित है या धातु में समाहित हो चुकी है तो उसके आधार पर वो विद्वान का काम है उसको एसेस करना कि दोष रूप में दो कोष्ठ रूप में या आगे आश्रय रूप में या उसको धातु रूप में चला गया है तो टाइप्स ऑफ आम जो आम का कॉम्बिनेशन अन्य किसी दोष से होता है तो उसके रेस्पेक्टिव उसके लक्षण नजर आते हैं और उसका काम हम लोगों को कफ पित्त वात धातु का और मल का ये हम लोग जानकारी में है तो आम in contemporary site what it may be unable to pack either it may be unripe substance or toxic substance the possibility is that and what it might be either it may be predictable or toxin or antigen antibody reaction which are going to be the unidentified by the body and the degenerative entity in this relation, you can understand the toxins are present here liberated during this WBC action. There is the NADP are going to be the change the NADPH with the action of this SOD, sodium oxide dismutase, and the sodium oxide dismutase are going to be changed the superoxide formation, going to be the decline by the formation of the H2O2 hydrogen peroxide, which are the less toxic. Otherwise, the superoxide substance is going to be combined with this nerve cells. This nerve cells going to be the attacked and going to be the degenerative stage. That's why I think so. In the normal person, normal condition of the WBC remain it is 4,000 in the second aspect of the description and the to nullify the antigen antibody or toxic substance formation. And next to the coast, we people are knowing the coast is so much importance in our body in spite of that there is no existence of dosa and this coast comes under this major 8 component and this major 8 component they regulate all over the body functions. This coast according to the those dominance and the importance of coast. Why we are considering the importance of coast is as so all dosa has the main seat in the coast and the coast is basically made up of ras, rakt, mans and the meda. Nothing. This is my personal perception. There is nothing you will find there is the existence of the asthi majjaya sukh and the in coast. And the second explanation of this coast is basically made up of 4 because if you see the Sarp Visvega in Sutrasthan, sorry, Kalpasthan by Susut Samhita, there is the movement of Sarp Vis, Pratham, Dvitiya, Tritiya, means Rasrakta 1, Raktmans 2nd, and the Mans Med is 3rd. 4th one Veg is the coast. So, if there is involvement of Asti Majja and Sukra, then coast
should be comes after the Shukra Dhatu. That's why, on that basis, we are saying that this is my assessment. The coast is made up of basically Ras, Rakt, Mans, and the Meta Dhatu. According to coast, diet may be the indicated as crude coast have the heavy diet and the middle coast going to be the light diet. And the for those expulsion through the coast marga, the Vidya Visandanath Paka Sotom Visodhnath means coast from Saka going to be the coast, and then from this mark those are going to be the eliminated. And the coast influences the frequency of diet. Means a person variety of coast is should be taken minimal diet or according to the rule of the diet. And the coast knowledge intimates the type of drug usage, drug and the diet usage, like should not be used as the milk for the purgation point of view in the crude coast. So many descriptions people are aware. And the wild coast and the viruddha, otherwise going to be the created the amadosa. And the coastgata roga has the 1/3 of all diseases. As a Sakhasit, Coasthasit, and the Marmasit disease. The coast is the 1/3 of the all diseases. And almost all diseases arises from the coastgata, as mentioned in the Roga Sarvapi Mandagno Sutra Mudraniche. These are the some description I mentioned in this कोष्ठ मध्य व तरुणम पित्वा मृदु कोष्ठ विरेच्यते। मृदु कोष्ठ में अगर मध्य और तरुण ही केवल पिला दिया जाए तो विरेचन हो सकता है। विरेचयन्ति नयतानि क्रूर कोष्ठ कदाचन, और क्रूर कोष्ठ में शायद इससे विरेचन नहीं हो सकता है। इसके ऊपर भी मृदु कोष्ठ के लिए आहार सफिशियंट अमाउंट में दिया है। तो इस तरह से हमको मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ का एनालिसिस करके ही हमको आगे चिकित्सा की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसके लिए असेसमेंट हमारा इम्पोर्टेंट है। तो मृदु के लिए मृदु वीर अल्प मात्रा, मध्यम के लिए मध्यम वीर मध्यम मात्रा, और क्रूर के लिए तीक्ष्ण वीर और उत्तम मात्रा, इसका उपयोग करना चाहिए। तो कोस्ट कैन बी सीन with as an anatomical as well as the physiological entity, and the physiologically it can be regarded as the bowel habit as a person. Post assessment play the major role for the success carrying out of the Sanshodhan Karma. And if you see the detailed description in Siddhyasthan, so many indicated and contraindicated I have mentioned regarding the coast vikriti. If there is the coast vikriti, should not be is doing as. And while we are providing the coast assessment, on that basis we assess the coast as well as the level of dosa. And the coast pariksha is an important factor among the many other to assess while prescribing any aushadh drug of a patient. And major role to maintain the health and cause of disease in different component. And the Roga Sarvayapi means coast is the only site where the disease is going to be the created. And this arrangement and this presentation, there is involvement of and the help of Balaji Thakur and Sajis, their key role, and our department making this assessment by this workshop, and the different CMA have the created. So the so many work have going to be the put in department and comes in the fruitful condition. And this on this point we like to this sum up by providing the my short and the setup my voice. I request to audience, if they have any problem or any suggestion, welcome. Thank you very much, sir, for such an elaborated session.
on Agni, Yam and Coast, because before proceeding to any of the Ayurvedic studies, we need to understand the basic concepts, and these are quite important topics. Now the session is open for queries. Anyone who is having queries regarding these topics can put their queries in the chat box or can raise their hands. Organizers will unmute that person. Hello, sir. So, Good evening. Good evening. I am Dr. Harini. Sir, thank you very much for a very nice and comprehensive presentation. So, usually, whenever we take up research protocols, a validated questionnaire or scales is what is asked for. So, are you aware of any validated scale or tests for Agni, Kosta, which can be adopted in our research protocols? Yeah. There the two study have been done. If you have the care, I have skipped that studies. If you are interested, then I can show you. Either you want to this link, I will send you. There are two study I have done. One has the 64 questionnaire. In spite of there is the different questionnaire has the put over there. Samagni, Bismagni and Tichagni. And if you want to, I can show. And the second one, each attributes quality of each dosa have completed our department with their gradation and the hierarchy level assessment level. Hello? Hello? सारिका जी? जी सर, आप ऑडिबल हैं सर? हाँ नहीं, डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन दिया था। हाँ जी सर। हाँ तो नहीं, अगर उनको चाहिए, उनका एक क्वेश्चन था कि है असेसमेंट के लिए कौन सा पैरामीटर बना है, तो वो हम सब्जेक्टिव पैरामीटर बना है उसको हम इनको दे सकते हैं। वो सर हमारे हम Sir, Namaste, sir. Back again. Sir, you should have, I feel you should have included those points itself in the presentation. It would have been a great help to us when we take up any research projects like that. Because this is where we have a problem. If we have to take some scales or validated questionnaires, there should be some validation. Otherwise, if each one of us have our own scales, then it is not accepted world over. Probably you could have included this in your presentation. It would have been very useful to us, sir. Means when I am talking regarding the two publication, they are going to the published on the PubMed, and our department work is in pipeline for the publication. Okay, sir. Though in PubMed they have to publish the two article related. One is the 44 question and the other is the 64 question. Even though it had is the validated, so it had is the published. Otherwise not. Okay, sir. Sir, is there a possibility that you could share it with research council so that they can make it mandatory for all the PG scholars or wherever research projects are being taken up, so they can make a same scale being used? I mean, that's how we can generate data, right, sir? It is open data. It is open published published article. You search in the assessment of Agni, you will find the different types of the literature. Okay, sir. Thank you, Type sir. of the article and the PubMed. They are the index journals. Okay, sir. Thank you. Thank you. Next. any other queries? Dr. Rajkumar from NIA, please ask your query. Dr. Rajkumar, I have sent you the unmute request. Please ask your query. अच्छा ठीक है।
चूंकि जितने भी आर्टिकल थे और हमारा जो वर्क था, डिपार्टमेंट का वर्क था, वो सब मैंने स्किप किया है। और वो जितने भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है उसको हम लोग लेने की कोशिश किया है। चूंकि ये काम आगे किया जा सकता है इसको लार्ज स्केल पर, चूंकि एमडी का ये वर्क था, इसलिए इसको सैंपल साइज की जरूरत है। Thank you very much, sir. Anyone Hello. else who is having queries? Yes, sir. Yes, ma'am. I would be very thankful to sir. Very nice presentation. If Rasagni slide, if possible, he may elaborate once more. Okay. Hello, Dr. Vikram sir. Am I audible, sir? हाँ हाँ, Definitely, we will provide you the recorded session. If there is any other query regarding session which is not presented here, so please ask, because the thing which are already covered, we will provide you as a recorded session. You can access anytime for the whole year. okay. Basically, what you want, Rasagni means the after digestion, the remaining component comes under the circulation in spite of RBC. We consider as a Rasagni. Yeah, entity which are going to be the change in the plasma. This means, and that entity comes responsibility to provide the every component of the next dhatu. Okay. The only ras dhatu have the capacity to change, have the tendency to elaborate further in the next dhatu, Rakt, Mans, Med, Asthi, Majja, and the Sukra. There is every hormone going to be circulated, and respective component residing in this plasma component and the protein part comes this under the Rasagni. This is the basically my view. As far as the code presentation is already the recorded, you can see at last time you will find it. Dr. Rohit Singh, please ask your query, sir. Thank you, sir. Namaste, sir. Namaste. Thank you so much, sir, for your elaboration about that important topic. Sir, I have just a minor query. सर, जब भी हम assess करते हैं किसी पेशेंट को फॉर द कोस्ट, तो सर एक्चुअली हम एनाटॉमिकली क्या assess कर रहे होते हैं? जी सर. एनाटॉमिकली हम अब जैसे आप जब बात करेंगे किसी चीज का, तो फिजियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनाटॉमिकली आपको देखना है कि हाँ, अल्टीमेटली हमको क्या देखना है, फिजियोलॉजिकली देखना है। फिजियोलॉजिकली देखने के लिए हमको एनाटॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। हाँ जी सर, है ना। तो हमें एनाटॉमी उसकी क्या है, जैसे बहुत पीछे का बहुत ऐसी बात आती है जिसको हम डायलेमा में या डिस्प्यूटेड पार्ट कहते हैं, क्लोम की बात आती है। लेकिन क्लोम की जो संदर्भ के जिन जहां जहां आपका बात आती है वहां वहां क्लोम का अर्थ अलग अलग बदल जाता है। जी सर, ठीक है ना। जी। तो इसी तरह हम जब रक्ताग्नि की बात करते हैं तो रक्तदानी का रक्त खम निर्माण जहां होता है तो वहां जो मशीनरी उपस्थित है हम उस चीज को हम मानते हैं। मांसाग्नि है, मांस का जहां फॉर्मेशन या जहां निर्माण होता है हम उसकी एनाटॉमिकली उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, एक्चुअली सर मैं यही शायद मैं आपको कन्वे नहीं कर पाया, माय फॉल्ट। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई टेस्ट कराते हैं, लाइक वी आर डूइंग द एलएफटी और केएफटी, तो हमें पता है कि वी आर फोकसिंग ऑन दैट लीवर एंड द एसोसिएटेड सिस्टम,
हाँ and the KFT we are focusing on the urinary system. तो वैसे ही सर जैसे इज इट पॉसिबल कि हम जैसे कोस्ट, मैं कहता हूँ कि आई एम असेसिंग अ पेशेंट का कोस्ट, मुझे लग रहा है कि ये मृदु कोस्ट है या मध्यम कोस्ट है या क्रूर कोस्ट है, तो एग्जैक्ट एक्चुअली व्हाट सिस्टम, इज देयर एनी सिस्टम वी आर असेसिंग, और इज देयर एनी ऑर्गन वी आर असेसिंग, और इज देयर एनी साइट वी आर असेसिंग? एक्चुअली हम बेसिकली एक्सेस क्या कर रहे हैं? हाँ, जी जो अब जैसे कोस्ट की अगर बात करेंगे तो कोस्ट उसमें 8 नाम दिया है, ठीक है। जी तो वहां हम एनाटॉमिकली नहीं देखते हैं, ओके हम सर। वहां फंक्शनली देखते हैं, जी सर। ठीक है। जो जी सर, हाँ फंक्शनली जी। बात होती है वही हम देखने की कोशिश करते हैं। एनाटॉमिकली उसमें आप जब देखेंगे तो वहां जब ऊर्ध्वगत आमाशय अधोगत आमाशय की जब बात आती है तो वहां पर हम देखते हैं, या पक्वाशयगत बात की बात करते हैं, आमाशयगत बात की बात करते हैं, ओके सर। वहां जी एनाटॉमिकली हम देखते हैं, जी सर। है ना। अब जैसे जी किसी सर। को आहार देते हैं तो आहार एक एक समय में आपको ये आता है कि इनका जो लक्षण आ रहा है ये आमाशय से आ रहा है, और एक समय बाद ऐसा आता है कि यहाँ पक्वाशय से आ रहा हाँ जी सर। है ना। तो हम वहाँ एनाटॉमिकली की बात कर रहे हैं। अब जब हम विरेचन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो आहार औषधि देंगे वो पक्व होने के बाद उसका असर, जब तक आहार पक नहीं जाएगा या पाचन नहीं हो जाएगा तब तक हम उसका असर नहीं देख सकते। ओके सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। There is last query from Dr. Dharmen Kumar Pandey. Sir, please ask your query, sir. Dr. Dharmen Kumar Pandey. हेलो। हाँ Yes, sir. बोलिए धर्मेंद्र। जी जी नमस्कार सर। आपने सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और ये बहुत ठीक ठाक ढंग से समझ में आया। एक जिज्ञासा थी मेरी सर, जैसे जो अग्नि होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम लोग सामान्य रोज आहार का सेवन करते हैं जी जी और किन्हीं परिस्थितियों में जब हमको औषधियों का सेवन करना पड़ता है, तो वो अग्नि दोनों चीजों को कैसे हैंडल करती है? मेरा कैसे प्रश्न कैसे ठीक हैंडल ठाक? करते हैं मतलब? जी, हैंडल मतलब ये है सर कि जो हमारे शरीर की अग्नि है हाँ वो आहार द्रव्य को पचाने का उसका स्वरूप जो होता है, तो क्या उसी तरह से औषधियों का भी पाचन वो करती है या उसके लिए कोई परिवर्तन होता है उस अग्नि में? नहीं नहीं, जो जी अग्नि है वो तो अग्नि उसी तरह पाचन करेगी। जी आपकी औषध आहार है, वही भी औषधि की तरह भी काम करती है। आप काली मरीच खाते हैं, जी काली मरीच के लिए वही अग्नि काम करेगी जो आपकी जठराग्नि है। जी या आप अन्न खाएं तो अन्न भी वही अग्नि काम करेगी। जी उसके लिए वो लेवल अलग होगा, समय के अनुसार आपका लेवल बदल जाएगा। जी ठीक है, पहले पाचकाग्नि काम करेगी, फिर जी भूताग्नि होगी, फिर जाकर के धात्वाग्नि काम करेगी, जी है ना। तो उसमें ठीक। ऐसा नहीं है कि औषधि की अलग अग्नि होगी या आहार के लिए अलग औषधि होगी या अग्नि होगी। अग्नि अग्नि तो आपके जो शरीर में है उसी के लिए। अब निर्भर ये करता है कि आप जो अग्नि जो हो रहा है वो अग्नि किससे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके आहार से ही तो इन्फ्लुएंस हो रहा है और जी आपकी औषधि से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जी ठीक है भाई, आपकी मंदाग्नि है तो मंदाग्नि के लिए आप पंचकोल देंगे, त्रिकटु देंगे ना। जी जब ये पंचकोल त्रिकटु देंगे तो वो अग्नि का ही तो निर्माण करेगा। जी ठीक है, आप खाने के पहले आप पेय लेते हैं, यूस लेते हैं, जी अपनी दीपन ही तो करती है। जी ठीक है, वही एक तरह से आपका औषधि के रूप में काम किया, आप भोजन करेंगे वो आहार के रूप में काम कर रही है। जी ठीक है सर, मैं एक तो समझ गया। अगर मान लीजिए इस संदर्भ में बाद में मेरे को कोई प्रश्न समझ में आता है, हम्म
तो क्या उसको आपसे अलग से कुछ चैटिंग वेटिंग करके उसको समझा जा सकता है, अगर इसके लिए अनुमति आप दें तो? नंबर नोट कर लीजिए हमारा। जी सर, आप बता दें सर। 9887 9887 3157 3157 17। 17। और जी सर। डिटेल जाना हमारे बारे में डिटेल, हमारा जी सर। ईमेल भी है आपको nia.nic.in पर, वहाँ पर जा करके शरीर क्रिया डिपार्टमेंट में जा करके हमारा नाम देख करके मेल कर दीजिए और फोन कर लीजिए। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। Sarika ma'am, I think all queries are covered now. Okay. Thank you very much, Mahendra Prajapati sir, for attending all the queries and supporting them with their all the doubts, for clearing all the doubts the participants had. Now I request chairperson of today's session, Professor Surendra Kumar Sharma, to please kindly conclude the session. Sir is currently working as professor in the Department of Rog Nidan in National Institute of Ayurveda, Jaipur. Sir is having more than 21 years of teaching experience, and sir has guided 15 MD thesis. Sir has contributed various chapters in 4 books. Sir has got his fellowship from WHO. I request Professor Surendra Sharma sir to kindly conclude the session. He has he elaborated about the knee and fifth. Sir, you are not audible, sir. Okay. Now I am audible now. Now I am audible. Yes sir. सर आवाज नहीं आ रही है। Now I am audible. हाँ सर, अब आवाज आ रही है। Yes sir, yes sir. First of all, I am congratulating to Dr. Mahendra Prasad Prajapati. He has nicely presented about the Agni and also Aam also. So he has presented some resemblance of the Agni and but in Ayurvedic aspect, Agni is सर आवाज आपकी कट कट के आ रही है सर। सर साउंड नहीं आ रहा है प्रॉपर। So Pitta is included in the Agni. In likewise, in Rakta Dhatu. Rakta Dhatu has a Visra, Drav, Rag, Spandan, Laghu, all the gunas. And Rakta in Ayurveda says ki Dhatunam Shaivradhi Shonit Nimitte. All the Dhatus are nourished by the Rakta. So in this aspect, Raktagni is very important. And Raktagni's work is mentioned by the Charak Acharya also. The Prasanna Varnendriyam Nichantam Avyahat Apaktra Vegam Tushti Pushti Vishuddha Raktam Purusam Vadanti. The Charak also says about that. So he has nicely presented about that. So Agni aspect is a very big aspect in Dhattvagni level as well as Jakshagni level as well as Bhutagni level. So we have to Dr. Prajapati also convey to the message to in very nicely to message convey in apart from the Agni, he has described about the arm also. So arm is he has told about the arm. Arm is a residual part which is not assimilated by the body. Also he has worked as a like a toxin services. So in this regarding, we have to justify
we have to justify the arm is a parameters of arm. The Srotorod, Balbrans, Gaurav, Anil Murta. These are assessing point of to assess the arm. So in this regarding, the Dr. Prajapati is collaborate the modern aspect also. So, but some theories, likewise Dr. Dharmendra, the process of the process of the Ahar Dravya and process of the Oshad Dravya. So Ahar Dravya is Ras Pradhan and Oshad Dravya is Veer Pradhan. So the Veer Pradhan is a drug is assimilated more quickly, like the Rasas says Alpmatropyogitvam. So the Veer Pradhan drug naturally our system, our local system also, our enzymatic system also. So Veer Pradhan drug is assimilated by the very quickly. Likewise the Oshad Dravya, Ahar Dravya is similar to. So in this regarding, we needed in this perspective, it is needed to elaborate. We have to elaborate more concisely, more elaborately about the Agni aspect in this regarding. So Dr. Prajapati has nicely presented, and Dr. Prajapati, our audience are also very well-versed, very skillful. So he has narrated a lot of questions, and Dr. Prajapati answered very good, very nicely. So I am also conveying my message audience. The audience is very good and very learned person. So we have to work together and to upliftment of the to enhance our fundamental aspect of the Ayurveda, likewise Agni and Am, and we have to do work regularly in regard. The work is still doing, still work is not completed now. Dr. Prajapati is proceeding that, but some work, a lot of work are have to left, which are in future we have to explore in future. So I am congratulate the organizing committee and Dr. Prajapati and also organizers and also audience also is the skillful or the audience and other also. Thank you Lord, Dr. Sarika ji and other person. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable inputs regarding Agni Am and research ideas. What is the need of validating all these things? And we have reached more than midway. Thank you again. Thank you all participants. And now session is over for today. Thank you. Thank you, Sarika ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. We from the Joint State Training Center of Institute of Applied Statistics and the National Institute of Ayurveda, Jaipur, convey our sincere thanks to all the participants for their active participation and commitment for today's session. We heartily thanks the guest speaker of the session, Dr. Mahendra Prasad from Department of Trias NIA Jaipur, who kept participants engaged by the way of very informative lecture, query discussion. We congratulate him for making the session more interactive. Thank you, sir. We also thank Dr. Surendra Sharma sir for chairing today's session and sharing his experience about the session with the participant. Thank you, sir. We again thanks to all the participants, and tomorrow's session will start at 6 p.m. sir. Be joined at 10 minutes earlier. Thank you, sir. Thank you to all. Thank you.